So now we will discuss about the color. Okay, so how this transition element they are showing the colors, different colors. So we have already seen that these transition elements, okay, in a D block element, they are in between S and P block element. बराबर है. अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो S block elements है, ओके, और ये बीच में है आपके D block elements, ओके, और इसके राइट साइड में कौन सा है, ओके, P block elements है. So as this D block is present in between this S and P orbital, they will show some colors and they will show some metallic properties. And you know what are the metallic properties are? Okay, like lusterness, like luster, then hardness, malleable, ductile. Okay, all this we have already been discussed. Now we'll discuss about the color. Okay, so when we are talking about the color, so a substance that appears colored, कब appear होता है ये colored? जब ये absorb कर लेता है. Okay, when it absorb the portion of visible light. Okay, तो ये देखो जब भी substance क्या करता है, absorb करता है a portion of visible light, because visible light they are having some different wavelength. Okay, and depends on that the color depends upon the wavelength of the absorption. Okay, वो किस रेंज में वो एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, तो वो किस रेंज में, ओके, किस रेंज की वेवलेंथ को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, अपना जो कलर है वो शो करता है. ओके, वो डिफरेंट एलिमेंट. So in the visible region of the electromagnetic radiation. So this color factor is depends, okay, it depends on what, it depends on the which wavelength it is getting absorbed. तो कौन सी वेवलेंथ को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है. ओके, सो the ionic and the covalent compounds, okay, they are formed by the transition elements. Okay, so we have already discussed about when it will form the ionic bond and when it will form the covalent bond. Okay, yesterday's lecture में हम लोगों ने already देखा हुआ है. Okay, so when they are having higher oxidation state, they will form the covalent compound. Okay, covalent compound कब form होते हैं, जब उसमें oxidation state जब क्या होता है, ज्यादा होते हैं, तब then it will form a covalent compound. और ionic compound कब form होते हैं, when its oxidation state, okay, when there is a less oxidation state is present, that time it forms a ionic compound. Okay, so based on that the transition elements they will show color, and they contains this transition element, they contain unpaired electrons. उनमें क्या होता है, unpaired electrons होता है in their d orbitals. Okay, so when atoms are free or when they are isolated, these five d orbitals are degenerate. Okay, degenerate orbitals, what are the degenerate orbitals, you have studied in 11th standard. These are having a same energy, जिसमें सेम एनर्जी होती है, उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स. ओके, सो as per the principal quantum number, okay, if we discuss about, we have already you have already studied the principal quantum number which is represented by n. Okay, the principal quantum number of d orbital is same, बराबर है ना. d orbital का जो principal जो quantum number होगा, okay, हम लोग बोलते हैं कि n is equals to 1. Okay, for the orbit, very first orbit, okay, k l m, like this. Okay, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इस डी ऑर्बिटल के लिए, ओके, सो as the principal quantum number of this d orbital will be same, okay, ये same रहेगा, the amount of energy whatever the required for the transition of means transition means the movement of the electron, okay, from one d orbital to the another. Okay, तो ये जो ट्रांजिशन, इसको जो ट्रांसफर के लिए, इस ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, because the movement of this electron that is going to take place within the same orbit, d orbital में ही, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, इट विल रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. Okay, so small energy is required for the transition, and that is available by, वो कहाँ से available होगा, that amount of energy is available by absorption of radiation. Okay, absorption of radiation having certain wavelength from the visible region, and remaining light will be what, it will be transmitted. Okay, remaining light will be transmitted, and the observed color of the compound corresponds to the complementary color of the light absorbed. यानी जो हमें लाइट जो हम लोग जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें जो कलर जो दिखता है हमें,
Okay, that color is due to mainly the absorption, okay, the absorption of the portion of the visible light. Okay, due to this phenomena only, okay, we are saying it is having a color, different colors. Okay, तो हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो सपोज any vanadium is having suppose green color. Okay, suppose any another chromium is having suppose violet color. It is based on the amount of the absorption, okay, of the visible light. visible range में जो भी wavelength है वो absorb कर रहा है. Okay, उसके कारण क्या हो रहा है, हमें वो उसका कलर दिखाई देता है. Okay, so if red light is absorbed, okay, if red light, okay, if the red light is absorbed, then the transmitted light contains excess of other color. बराबर है. अगर रेड कलर मान लो एब्जॉर्ब होता है बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो बाकी के जो जितने भी कलर है, ओके, ट्रांसमिटेड लाइट, the transmitted light will contain the excess of other colors, okay, in that spectrum. And this is the representation. Okay, आप देख सकते हो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन. ओके, so this is the way by which they are represented. The ions, okay, that are having unpaired electrons are colorless. जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स अगर जीरो है, ओके, सपोज आयंस उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नहीं है प्रेजेंट, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जीरो सपोज नंबर आर प्रेजेंट, so they are colorless. Okay, these are colorless. Okay, these are colorless. So that can be seen through the टेबल. आप टेबल से देख सकते हो. ओके, चलो टेबल शो कर लेता हूं मैं आप लोगों को. तो आप देख सकते हो ये टेबल दिखाई दे रहा है सब लोगों को. ओके, दिस इज द टेबल. थ्रू दिस टेबल ऑब्जर्व दिस स्कैंडियम 3+. ओके, स्कैंडियम का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 3d1 4s, ओके, 2. तो 4s में से दो चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और एक 3d में से चला गया. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए उसके स्कैंडियम के, स्कैंडियम 3+ के लिए? यस, कितने हो गए स्कैंडियम 3+ के लिए? जीरो हो गए. सो इफ जीरो ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, दैट विल शो द कलरलेस. ओके, सो यानी इससे आप क्या कोरिलेट कर सकते हो? दिस यू कैन कंक्लूड दैट it depends upon the color is also depends upon the number of unpaired electrons. Understand? If there are suppose some number of electrons are present, okay, unpaired electrons are present, यहाँ पे देखो one pair है, so it will show some color. Once again zero, it will not show any color. Okay, so like this 4 5u, okay, maximum 5u, ये देखो या फिर 3+ में आपको दिखाई दे रहा है. Okay, 5 unpaired electrons, they will show the different colors. Okay, and once again when there will be no paired electrons, that time it will show a colorless. Okay, that will show the colorless. So the color is also purely based on the number of unpaired electrons. Okay, and this is the visible wavelength है. Okay, wavelength के हिसाब से इन्होंने color arrange किया हुआ है. Okay, that it is in between, yellow color will be shown in between 560 to 580 nanometer. Okay, nanometer is 10⁻⁹ meter. उसके अगर रेंज में उसका वेवलेंथ है, तो अगर उसका एब्जॉर्प्शन होता है तो इट विल शो द येलो कलर. ओके, सो this color, okay, so how the color of this transition metal of the ion, which is purely depends upon the ligand. Okay, the ligand, that are the anions or the molecules, okay, in which it donates the pair of the electron to the central metal atom. Okay, the formation of the ligand we can say. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे. So how colors of the transition metal, it depends upon the ligand. Okay, it is depends upon the ligand, and it depends upon the geometry of the complex formed by the metal ion. So you have already studied about this ligand. Whenever the any suppose anion or suppose any molecule which donates a pair of electron, जब भी क्या होता है, एक pair of the electron जब ये donate करता है, okay, और किसको डोनेट करता है? सेंट्रल वाले मेटल एटम को. सेंट्रल वाले मेटल एटम को जब ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ओके, सो इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स that is called as a ligand. So so this color of the transition metal ions, it purely depends upon the formation of this ligand and the geometry. Okay, so consider the case when these cobalt,
ओके आप देख सकते हो कोबाल्ट CO2 प्लस इज व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर, जब इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं वाटर में तब ये क्या करता है, पिंक सॉल्यूशन, ओके पिंक सॉल्यूशन शो करता है, ओके दैट इज आल्सो शोन हियर, ओके सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ओके which has a octahedral geometry, which has a octahedral geometry. But when this solution is treated with the concentrated hydrochloric acid, okay, so it turns deep blue, okay, it turns इसका जो color है वो deep blue हो जाता है. So this change is due to formation of the another complex. Okay, आप देख सकते हो initially when this CO2 plus is dissolved in water, okay, so it forms a pink solution. ये देखो इसका color suppose pink solution form हो रहा है when it is dissolved in a water, okay, when it is dissolved in water and it forms a pink solution, okay, of this complex COH2O, okay, all bracket 6 2 plus. इसका कौन सा कलर दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देता है, ओके कौन सा कलर दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देता है इस, ओके but when it is treated with the concentrated hydrochloric acid it consists of H plus and the Cl minus ions. तब जब ये Cl minus ions के साथ when it get react, it formed the another complex and which has a tetrahedral structure. Initially this is having octahedral structure, ये देखो initially octahedral structure है इसका, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ओके सो इट टर्न्स द पिंक कलर इनटू डीप ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर में चेंज हो गया, ओके सो ट्रीटिंग इट विथ ट्रीटिंग दिस कॉम्प्लेक्स, ओके विच इज हैविंग ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पिंक ब्लू कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया ये ब्लू कलर में, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गया, ओके सो इन दिस वे the it depends, okay the color of this transition metal ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, so it depends mainly upon the presence of unpaired d electrons, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, okay presence of d जो ऑर्बिटल है, हाउ मेनी अनपेयर्ड, अगर उसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है so it will show colorless, इसमें सपोज one है, okay so it will show some different color, so depend on the number of unpaired electrons it will show the different colors, so color will be depends on the number of the unpaired electrons, this is one. Then next we have seen how the d transition, that is transfer of the electron from its one d orbital to the another d orbital, it will also show some color, and it also depends upon, okay the nature of the color, it depends upon what, the nature of the ligand which is attached to the metal ion, okay metal ions के कौन से ligand attach है, कौन से anion, okay और कौन सा molecule जो डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, ओके उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, as well as it is also depends upon the geometry of the complex, okay which is formed by the metal ions. So on all these four factors, okay the color of the transition metal is related, okay color of the transition metal is related with these, okay four factors, okay one by one we have already discussed how the presence of unpaired electrons is showing, unpaired electrons is showing a different colors, how the dd transition, what is the meaning of dd transition, the transfer of one electron from within the same orbit, okay that is called as a dd transition, transfer of the electron. Then next one is the nature of the ligand which is attached to the metal ion, and the last one is about the geometry, इनके ऊपर depend करता है कि कौन सा color of the transition metal it will show, okay so the this is about the color, okay now we'll see very important properties, okay that are shown by this that is transition elements, okay so d block element are, they are showing the catalytic property, most of the catalysts आप अगर देखोगे so they are from these d block elements, okay so transition element and their compounds they exhibit good catalytic property, they exhibit very good catalytic property, ओके ये क्या शो करते हैं, बहुत ही अच्छी जो प्रॉपर्टी है, ओके कैटालिटिक प्रॉपर्टी, it is shown in by this transition element d block element, okay so they have proven to be a good homogeneous as well as a heterogeneous catalyst, okay so the different oxidation or reduction states of catalytic reaction that we will see here, okay so
So now the compounds. Okay, if you'll see the compounds of this iron, cobalt, nickel. Okay, so these elements. Okay, this Pd. Okay, so palladium. Okay, then this platinum. Okay, then this chromium, they are used as a catalyst in a number of the reaction. तो ये कहाँ के element है? ये iron, cobalt, nickel, palladium, platinum, chromium, these all are from D block. Okay, transition element है ये वाले. Mostly they are used as a catalyst in very number of reactions. Okay, बहुत ही अलग अलग reactions में ये use किया जाता है. Okay, so enhance the rate of chemical reaction. What is the function of the catalyst? You know, okay, it enhance. We have already studied in case of chemical kinetics. Okay, so they enhance the rate of chemical reaction. क्या करते हैं catalyst? Enhance करते हैं rate of reaction को बढ़ाते हैं. Okay, जो gap है उसमें, okay, जो activation energy की हमने पढ़ा हुआ है. Okay, so it reduces that gap. Okay, and it can jump from that energy barrier. Okay, that is the function of the catalyst. We have already studied. So in homogeneous catalysis, okay, reaction, the metal ions participate by forming unstable intermediate. Okay, ये क्या करता है? Unstable intermediate form करता है. And in heterogeneous catalysis, the reactions, on the other hand, the metal provides a surface for the reactants to react. Now we'll see with the help of example. Okay, examples देखेंगे हम लोग इसको. So MnO2 acts as a catalyst. MnO2 क्या करता है? Act as a catalyst. We have seen. Okay, manganese dioxide acts as a catalyst for decomposition of KClO3. Okay, then in manufacture of ammonia by the Haber's process. Okay, so this molybdenum and iron is used as a catalyst. Okay, ये भी आपको पता है. Okay, then this cobalt. Okay, this cobalt and this element, okay, called as this TH. Okay, so these are called as, these are used as a catalyst. Okay, catalyst use होते हैं ये वाले element. Okay, thorium as well as this cobalt is used in the Fischer Tropsch process for the synthesis of gasoline के लिए use होता है. So there are different these. Okay, nickel है. Okay, finely divided nickel which formed by the reduction of the heated oxide. Okay, in hydrogen is an extremely efficient catalyst. आप देख सकते हो. Okay, nickel which is used here as a catalyst, which is converting. Okay, which is converting this. Okay, इथीन आप देख सकते हो convert हो रहा है. Okay, इथेन में कैसे convert हो रहा है तो. So commercially, this hydrogenation with nickel as a catalyst is used to convert this inedible oil, okay, into solid fat for the production of the margarine. Okay, margarine which is spread over. आपको पता है margarine कहाँ पे use करते हैं हम लोग. Okay, margarine which is spread over for maybe cooking purpose के लिए वगैरह use किया जाता है margarine को. So these are various examples, okay, which is listed here, okay, which are acting as a catalyst. Okay, so now formation of the interstitial compounds. कौन से interstitial compounds है? Okay, what are the interstitial compounds? So when small atoms like this hydrogen, okay, so small atoms like this hydrogen या फिर carbon, okay, or nitrogen, they are trapped in interstitial spaces. What is the meaning of interstitial spaces? We have studied in a solid. Okay, solid structure में जो gap present है molecules के बीच में, atoms के बीच में जो gap present है. Okay, तो उसमें जो गैप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं ना, इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, सो दे गेट ऑक्युपाइड. So when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in interstitial spaces within the crystal lattice, okay, the compound formed called as a interstitial compound. That compound form, जो compound जो form होता है उसको बोला जाता है interstitial compound बोला जाता है. Okay, that compound is called as the interstitial compound. Okay, so when such a small atom, okay, like hydrogen or carbon, जब ये trap हो जाता है, okay, between interstitial space within the crystal lattice, okay, उसको बोला जाता है interstitial compound. So sometimes the sulfide and oxides are also trapped in a crystal lattice of transition elements. Okay, steel and cast iron are the examples of interstitial compounds of carbon and iron. Okay, steel और ये example है उसके. Okay, steel and cast iron, these are interstitial compounds of the carbon and iron. Okay,
So what are the properties of this interstitial compound? Okay, what are the properties of this interstitial compound? So they are hard. Okay, interstitial compounds, they are hard as well as a good conductor of heat and electricity. Okay, so what these are interstitial compounds, when there's small atoms, when they get occupied in interstitial space within the crystal lattice में जब ये occupy हो जाते हैं तब ये interstitial compound form करते हैं. तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे विल हैव एज वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, दे आर वेरी हार्ड. ओके, एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल. एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पैरेंट मेटल. ओके, और डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो भी हायर रहेगा. ओके, एंड दैन द प्योर मेटल. So their densities are less. Okay, if you compare their densities, okay, these will be less than the parent metal. Okay, so the metallic carbides are chemically inert. Okay, metallic carbides वो होते हैं वो जो chemically inert होते हैं, means they will not react, and extremely hard as a diamond. Okay, and hydrides of this transition metal. ओके, हाइड्राइड्स ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल. व्हाट इज द ट्रांजिशन? जब ये ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में. ओके, दे विल फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल्स एंड दे आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, दे आर वेरी यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है. ओके, सो टंगस्टन कार्बाइड इज यूज फॉर कटिंग टूल्स. ओके, आपने अगर जो कटिंग लेथ मशीन्स में जो टूल्स होते हैं, ओके, कटिंग टूल्स जो होते हैं, these are made from the tungsten carbide के होते हैं. ओके, these are made up of the tungsten. हमें पता है टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है? Yes, who will tell property of the tungsten? Tungsten is very it is having high melting point. उसका बराबर है ना, उसका जो melting point है. Okay, so it is very high. Okay, along all these transition elements. Okay, so that's why उसका melting point high है, means it is very hard and it is used to prepare a cutting tool. Okay, कट करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए उसके टूल में जो है वो टंगस्टन का कार्बाइड यूज किया जाता है. Okay, so which is very hard. Okay, which is very hard. We have just see these interstitial compounds are what? Very hard. They are very hard. And the iron carbide is used to manufacture a steel को manufacture करने के लिए भी use किया जाता है. Okay, so the formation of alloy, you know very well what is the alloys. Okay, and how the formation of alloy takes place for these transition elements. Okay, so transition element, these transition metals, they form alloys. Okay, where atoms of one metal are distributed randomly in a lattice of the another metal. Okay, so lattice में जो interstitial space होती है, okay, interstitial जो wide होती है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये जाके बस जाते हैं उसमें, and they will form a very hard compound. Okay, so transition metal form alloys where atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal. Okay, so alloy are classified into two categories. One is a ferrous and one is a non-ferrous. Ferrous और non-ferrous category में इनको distribute किया गया है. Okay, ferrous, you know, ferrous is it is related with the iron. Okay, so ferrous alloy में क्या है? Okay, so this ferrous alloy have atom of other elements and they are distributed randomly in the atom of the, कौन सा central atom है? Iron उसमें central atom है. कौन सा है उसमें? Iron उसमें central atom है. That's why they are called as a ferrous. Because ferrous, okay, because ferrous, this name is for iron, which will act as a central atom, and in the interstitial voids, in the interstitial space, the another, okay, other जो atom है, okay, अदर एटम से वो क्या हो जाएंगे, वो उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेगा वो स्पेस, एंड दे विल फॉर्म द फेरस अलॉय. ओके, फेरस अलॉय फॉर्म हो जाएंगे. ओके, सो द परसेंटेज ऑफ आयरन इज मोर हियर. ओके, इसमें जो परसेंटेज जो है आयरन का इस अलॉयज में, because we are calling it them as a ferrous alloy, so percentage of iron is very high. Okay, and more, and they are termed as a ferrous alloy. That's why they are termed as a ferrous alloy. The example being nickel steel. Okay, nickel steel इनमें percentage of iron ज़्यादा है. Okay, chromium steel. Okay, stainless steel. So all steels have a 2% carbon. Okay, if you are talking about any steels, so they will have a 2% carbon. Okay, 2% उसमें क्या रहता है? Carbon रहता है. So this is about the ferrous alloys of these transition elements. Okay, D group elements. Okay,
Now we'll see what are the non-ferrous. Okay, non-ferrous. So non-ferrous alloy, non-ferrous alloy. अभी जो non-ferrous है उसका नाम ही है non-ferrous. Okay, so these will be found by mixing atoms of the transition metal and other than iron. बराबर है, iron नहीं रहेगा इसमें. ओके, ट्रांजिशन मेटल रहेगा एक. ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें ट्रांजिशन मेटल रहेगा. ओके, और दूसरा कोई अदर अदर रहेगा अदर देन आयरन. ओके, विद द ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक ब्रास. ओके, आप देख सकते हो ब्रास है. ओके, which is an alloy of the copper and zinc. Okay, brass is which is an alloy of copper and zinc. Copper और zinc का ये क्या है, alloy है. Okay, so other than ferrous, iron नहीं use किया इसमें. So ferrous and non-ferrous alloys are industrial important. Industry में use होता है इनका. Okay, to prepare maybe you can say alloy based on the properties. Different material form करने के लिए ferrous and non-ferrous alloys का बहुत ही application है industry में. Okay, so this is about the formation of the alloy. Now the uses. Okay, अभी इनके uses. Okay, uses क्या है इन alloys के? So we'll see. आप लोगों ने सुना है ब्रॉन्ज, बराबर है, ब्रॉन्ज. ओके, ब्रॉन्ज ये किसका alloy है? ब्रॉन्ज, it is alloy of copper. Okay, copper and tin का alloy है. Okay, stannous का. Okay, so this is the alloy of the tin and copper. bronze कहाँ पे यूज किया जाता है? यूज आप यूज का यूज इसका कहाँ पे है? ट्रॉफीज देखा है आप लोगों ने, बराबर है ना? ओके, मेकिंग स्टैचू अगर बनाना है तो ब्रॉन्ज का जनरली यूज करते हैं. ओके, मेडल्स बनाने हैं, ट्रॉफीज बनाना है, दैट टाइम दीज आर यूज्ड. ओके, तो ब्रॉन्ज विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन. आप देख सकते हो कॉपर विच इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, कॉपर विच इज अ ट्रांजिशन. इसमें देखो आप देख सकते हो इसमें जो कॉपर है वो क्या है, हमारा ट्रांजिशन है. ओके, ये कॉपर है, ट्रांजिशन ग्रुप मेंबर है. बट टीन स्टैनस, ओके, इसका नाम है स्टैनस, NSSN. ओके, so which is a p block element, which is a p block element. Okay, so it is a non ferrous alloy. बराबर है ना? ब्रॉन्ज क्या है? नॉन फेरस alloy है जिसमें आयरन नहीं है प्रेजेंट. Okay, and it is very tough and it is very strong and corrosive resistance, and that's why it is used for making statue बनाने में. Okay, use होता है because statues that will be get directly contact with the atmosphere, medals and trophies बनाने में भी इसका use होता है. Okay, then next one is a this cupra nickel and alloy of copper and nickel. आप देख सकते हो कॉपर और निकल का. Okay, so कॉपर और जो निकल, ओके, इसका ये अलॉय है. ओके, सो कॉपर एंड निकल अलॉय क्यूप्रा विच इज यूज फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स. मशीनरी पार्ट्स बनाने में इसका यूज एप्लीकेशन है. ओके, मशीनरी पार्ट्स बनाते हैं इससे. ओके, देन लाइक मशीनरी पार्ट्स लाइक मरीन शिप्स बनाते हैं, बोट्स. ओके, मरीन कंडेंसर ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ दिस क्यूप्रा निकल. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टेनलेस स्टील. ओके, स्टेनलेस स्टील इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, डेली लाइफ में भी स्टेनलेस स्टील्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द आउटर, that is called as a fuselage. Okay, fuselage, outer fuselage. Okay, what is this fuselage? ये क्या होती है? outer fuselage means outer body जो रहती है एयरक्राफ्ट की. Okay, उसको बोला जाता है fuselage word, उसको बोला जाता है fuselage. Okay, so of ultra high speed aircraft. Okay, so those aircrafts are having ultra high speed. Okay, so more than, okay, supersonic speed. Okay, so these aircrafts are made up of this stainless steel. Okay, so these are the alloys. Then we have seen that the nichrome. Okay, nichrome and alloy of nickel and the chromium. Okay, chromium and nickel का ये alloy है जिसमें निकेल है 80% है and 20% is the chromium. Okay, has been developed specially for a gas turbine engines. जो gas turbines जो engines होते हैं इनमें निकेल और क्रोमियम के alloys होते हैं because gas turbine where जहाँ पे heat बराबर आता है, whenever heat is encountered here, okay, it must sustain that amount of heat
और इसके लिए ये निक्रोम के बनाया। आपने ये भी देखा होगा निक्रोम वायर हीटिंग, नाम सुना होगा आपने, बराबर। हीटर जो होते हैं, हीटर्स दैट आर ऑफ निक्रोम वायर हीटर्स। अभी देखो जो हीटर है, व्हेन इट विल गेट हीटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उसको, तो हीट करेगा, और हीट करेगा तो ब्रेक हो सकता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या चाहिए, इट शुड सस्टेन हाई अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई दिस निक्रोम वायर हीटर्स, ओके। सो दिस निक्रोम इज आल्सो यूज्ड इन हीटर्स में भी यूज किया जाता है, निक्रोम वायर हीटिंग बोलते हैं उसको, ओके। सो दैट आर आल्सो यूज्ड इन गैस टर्बाइन वेयर हीटिंग इज टेक्स प्लेस, ओके। So next one is a titanium. Okay, titanium alloy. Okay, they can withstand a stress up to very high temperature, and for ultra high speed flight के लिए यूज किया जाता है titanium. Okay, and gas turbine engines में यूज किया जाता है ये, इसका भी, okay. Then fireproof, okay, bulkheads and exhaust shroud यानी जहां से हमारा जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है ना बाहर, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट श्राउड, ओके। तो उस जो इक्विपमेंट को बनाने के लिए टिटेनियम मटेरियल यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा है हाउ दीज ट्रांजिशन, ओके, दी दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, हाउ दे आर वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्री पर्पस, ओके, because their alloys are very hard, okay. Their alloys like bronze, cupra, nickel, stainless, nichrome, titanium, these will be applicable, okay, for most of the industrial application, okay, for most of the industrial application. And this is the reason their alloys are very important, okay. Most of the catalysts are of this d block element. समझ में आया सब लोगों को, okay. So these are d block elements. Now we will discuss, okay, now we will discuss, so now we will discuss about what are the compounds, okay, compounds that are formed, okay, by these transition element. So in that category we'll see very first one is a manganese, okay, manganese, okay, which is a 25 atomic number, okay, manganese, which is outer configuration आप लोगों को पता है, okay, क्या है तो मैंगनीज का, ओके, 1 2 3 4 5, इट इज हैविंग द 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज। देन इट विल शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है मैंगनीज इन दैट ट्रांजिशन सीरीज। So we'll see now the compounds of the manganese, okay, and this chromium. So very first compound that we will see, we will discuss is the KMnO4, okay, KMnO4, okay, potassium permanganate. What is the name? Is KMnO4 का नाम क्या है? Potassium permanganate, okay, potassium permanganate is the name of that compound. So how this KMnO4, okay, how this potassium permanganate is prepared, that we will see preparation of this potassium permanganate. So very first method is what? Chemical oxidation. By the method of chemical oxidation, this potassium permanganate, that is KMnO4, is being prepared, okay. So when finely divided manganese dioxide, MnO2 is a manganese dioxide, जब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको जब हम लोग is heated strongly and with a fused mass of caustic potash, okay, potassium hydroxide के साथ जब ये react करता है with the oxidizing agent like potassium chlorate KClO3, यानी क्या हो गया, this KMnO2, sorry, MnO2, that is manganese dioxide, and this potassium hydroxide and this potassium chlorate, जब ये तीनों combine होते हैं, okay, at different condition, the dark green potassium manganate, okay, will be formed, okay. So dark green color का potassium मैग्नेट K2MnO4 फॉर्म होता है इनिशियली, ओके, डार्क ग्रीन कलर का है। सो विल सी दिस रिएक्शन, ओके, रिएक्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है उसका रिएक्शन दिया हुआ है, यस, आप लोग देख सकते हो, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन दे आर हीटेड, ओके, आप देख सकते हो हीटेड है, एंड दे विल फॉर्म द पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म करता है, ओके, पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म करता है K2MnO4, okay, K2MnO4 फॉर्म करता है पोटेशियम मैग्नेट। So in a neutral or acidic medium, the green potassium, it get magnet, disproportionate to KMnO4, okay, and manganese dioxide will be prepared. आप देख सकते हो उस पोटेशियम मैग्नेट को, okay, that is K2MnO4 को हमने ट्रीट किया
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, वी विल गेट दी पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। बट इसको, ये लिक्विड लिक्विड है, वो जो लिक्विड में मिलता है वो उसको हमें फिल्टर करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियली ऊपर में अगर आप देखोगे, सो दिस पोटेशियम जो मैग्नेट जो मिला है हमें, पोटेशियम मैग्नेट, ओके, so this is in liquid form, so this liquid is filtered, okay, so इस लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसको फिल्टर्ड करना पड़ता है, okay, so filtered through glass wool and it will get evaporated until the crystals are formed। और आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, ओके, सो डार्क कलर का दिखाई देता है, डार्क पर्पल कलर का, ओके, ब्लैक पर्पल कलर का आपको दिखाई देगा इसका कलर, ओके, KMnO4 का पाउडर 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 शेप है, ओके, so it is just like a crystals, okay, so the crystals will get appear, okay, so आप देख सकते हो almost black or purple color, okay, they will form a crystals, they will form a crystals, okay, so this is about the preparation, very first preparation is called as the chemical oxidation, okay, chemical oxidation, हम लोग oxidize कर रहे हैं उसको, okay, so we are oxidizing manganese dioxide to form, okay, potassium permanganate, okay, KMnO4. So this process is called as chemical oxidation. Next process is electrolytic oxidation. Next process of preparation of this KMnO4 is electrolytic oxidation. अभी इस electrolytic oxidation में होता क्या है, okay, कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नेट लिया जाता है, ओके, आप देख सकते हो कि मैग्नेट का K2MnO4, ओके, दिस इज द पोटेशियम मैग्नेट का सॉल्यूशन लिया है, ओके, सो मैग्नेट आयन इज इलेक्ट्रोलाइज, इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं हम लोग बिटवीन आयरन इलेक्ट्रोड, बराबर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ये वाला। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड है आप लोगों को पता है, इन एनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इट रिक्वायर्स सम सॉल्यूशन and it requires the electrode, बराबर है, it requires the electrodes, so in the same way here the this solution, alkaline solution of this potassium magnate ion is getting electrolyzed between iron electrode, okay, separated by this diaphragm, and this is the overall reaction आप देख सकते हो where this potassium magnate, okay, is forming the KMnO4 will be formed, okay, KMnO4 will be formed, so the oxygen evolved at the anode, it converts मैग्नेट टू परमैग्नेट, आप देख सकते हो ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व एट एनोड एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्ट मैग्नेट, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, ओके, विच इज कन्वर्टिंग दिस मैग्नेट इनटू परमैग्नेट, ओके, K2MnO4 से KMnO4 को ये कन्वर्ट कर रहा है दिस ऑक्सीजन, ओके, so this process is called as electrolytic oxidation process, okay, electrolytic oxidation process, the solution is filtered, अभी देखो ये solution है उसको filter करना पड़ेगा हमें, so when the solution is filtered and evaporated we get deep purple black colored, okay, we get deep purple black colored crystals of KMnO4, so this potassium permanganate which is in solid state, which is in the crystal form, okay, how it is obtained in a crystal form that we have discussed, वो देखा हम लोगों ने, okay, कैसे वो crystal form में convert होता है, okay, so now there this is about the preparation of this potassium permanganate, now we'll discuss about their property, chemical properties देखते हैं इसकी, okay, chemical properties देखते हैं हम लोग, so chemical properties of this potassium permanganate, how it is prepared, it is prepared by chemical oxidation or by electrolytic oxidation, okay, now we'll see the properties, okay, so chemical properties, that to chemical properties means its reactivity देखेंगे हम लोग, so the oxidizing reaction of this potassium permanganate is acidic, okay, in acidic medium, acidic medium में इसकी reaction देखते हैं, so oxidation of iodide to iodine, okay, iodine देखो iodide to this is iodine will be formed by using this potassium permanganate, okay, oxidation हो रहा है, oxidation, so it is used as oxidizing agent, we can say KMnO4 may be used as a catalytic, also catalyst भी use होता है, or it is used as a oxidizing agent, okay, so in acidic medium which is used to convert that iodide
ओके, ये जो आयोडाइड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो आयोडाइड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो बाय द एक्शन ऑफ दिस KMnO4। देन ऑक्सीडेशन ऑफ दिस Fe2+ to Fe3+, आप देख सकते हो takes place, okay, by acidic medium of this KMnO4, and it will get converted into Fe2+ to Fe3+, okay. Then oxidation of H2S, okay, so H2S का oxidation होता है, okay, so it is used as a good oxidizing agent, okay, so oxidation of H2S, okay, in this way it will take place to form two S2 minus ions, okay, S2 minus ions आप देख सकते हो, okay, and this S2 minus ions when this getting react with twice MnO4 minus, okay, in acidic nature it will form the Mn2 plus ions, it will form the Mn2 plus ions. So in this way it is used as a very good oxidizing agent, this KMnO4 potassium permanganate, okay. Then oxidation of the oxalic acid, okay, oxalic acid आप देख सकते हो, this is the oxalic acid, here is the oxidation of the oxalic acid will take place, okay, and conversion of this MnO4 minus into Mn, this 2 plus ions, that will also take place. This is about the acidic nature. Now we'll see is in neutral or weakly alkaline medium, okay, weakly alkaline medium में, okay, how it is showing. So oxidation of the iodide आप देख सकते हो, I minus is iodide ion and it will get converted into IO3 minus ions, that is iodate ions, okay, that is iodate ions. So these are the chemical properties of this potassium permanganate, okay, KMnO4, okay. Then thiosulfate S2O3 2 minus, it is getting oxidized, okay, इसको oxidize होता है, okay, by by using this oxidizing agent, क्योंकि potassium permanganate mainly used as oxidizing agent, and it will oxidize to the sulfate form, और आप देख सकते हो SO4 2 minus, okay, SO4 2 minus, okay, so thiosulfate से, okay, it is forming the sulfate. So in this way, then manganese salt is oxidized, MnO2, it is getting oxidized by using this, okay, potassium permanganate. So in this way, these are the chemical reactivity. These are the chemical reactivity of potassium permanganate. Okay, how this potassium permanganate is prepared, we have seen. Now, last part of this potassium permanganate compound, okay, which is of this manganese. Manganese का compound है ये वाला. Okay, so we'll see the uses of this potassium permanganate. Okay, so when we talk about the uses of this potassium permanganate, okay, so it is used as a antiseptic use किया जाता है, okay, you know what is the meaning of antiseptic, जहाँ पे कुछ कट गया, कहीं लग गया, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, okay, we can use this, okay, as a antiseptic to heal that, okay, any wound. Then for unsaturation, okay, unsaturation, okay, आपको पता है अभी unsaturated compounds कौन से है, okay, unsaturated compounds कौन से, so for unsaturation in the unsaturation test in a laboratory, so carbon to carbon double triple bond जो form होता है, okay, उसको बोलते हैं ना unsaturated compounds. So for unsaturation test in the laboratory के लिए this KMnO4 is used. Then in volumetric analysis, whenever we are measuring some volume, for analysis of that measured volume, okay, of a reducing agent, this is also used, okay, potassium permanganate is used. Then for detecting halides, okay, halides से, okay, halides जो form होते हैं in qualitative analysis, okay, quantitative and qualitative analysis. So from the qualitative analysis, it is used to detect the halides, okay, what are the halides from this analysis, okay, आप बोल सकते हो analysis. Then next one is a last powerful oxidizing agent, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो mostly it is used as a very good oxidizing agent as well as it is used as a catalyst also most of the cases में. So powerful oxidizing agent, it is used and in laboratory and in the industry. So these are all
the uses of the potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट के ये यूजेस है. ओके, हमने इसकी रिएक्टिविटी देखा, हाउ इट इज गेटिंग रिएक्ट, ओके, and how it is prepared. Okay, so these are what alloys. Okay, these are the alloys of these transition group member. Okay, transition जो elements है उनका ये alloy है, manganese का ये alloy है. Okay, so potassium permanganate. Okay, so with this